Good evening, folks. Hi, this is Amar here. Welcome to Unacademy, and this is specifically the Unacademy Empower program, right? It's a brand new program that's being started. We're going to essentially, through this program, cover product management, right? Very, very vast field. There are three of us. We're going to work together with you guys, right? Talvinder, Sonupam, and myself, right? And we're each going to handle different pieces. अगर आपने देखा होगा हमारा इंट्रो पिछले हफ्ते जहाँ हमने बात की कि क्या क्या कवर करेंगे हम, तो अगले 1-2-3 महीने में हम ये स्प्रेड आउट करके आपके साथ ये डिफरेंट सेक्शंस कवर करेंगे. ज़रूर यूट्यूब पर जाके जो अनअकैडमी एम्पावर का जो चैनल है उस पर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपको अपडेट्स फिर मिलते रहेंगे, राइट? तो आज का टॉपिक जो हम करेंगे, जो पूरी दुनिया बात कर रही है इस पर, वो है चैट जीपीटी पर हम अभी सिर्फ मैं बहुत ही बिगिनर लेवल पर आप लोगों से बात करूंगा. स्पेसिफिकली आज के ये सेशन में रेज्यूमेस के बारे में, ठीक है? सबसे बड़ी जो हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी जॉब हो, वो एक रेज्यूमे हमारा जैसे एक ब्रांड हो जाता है, प्रोडक्ट एक हो जाता है. तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये रेज्यूमे एक प्रोडक्ट की तरह हम कैसे बनाएं, राइट? फ्रेशर हैं या अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है, तो मैंने आज तक 15 साल में पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमेस देखे होंगे, राइट? डिफरेंट डोमेन्स के, डिफरेंट रोल्स के, सेल्स से लेके टेक्निकल से लेके, डिज़ाइन से लेके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ऑपरेशंस से लेके अब काफ़ी सालों में प्रोडक्ट मैनेजर्स का. हाँ, तो आज का फोकस हम रखेंगे स्पेसिफिकली हम चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं रेज्यूमेस बनाने के लिए, ठीक है? सॉरी, जस्ट एक सेकेंड मूव कर रहा था, चेक कर रहा था. बहुत बढ़िया. अब हम शुरू करते हैं. वेलकम. सो इन टुडेज क्लास हम क्या करेंगे, हम कवर करेंगे पहले तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि रेज्यूमेस का जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंस क्या होता है. सबको पता है, मगर फिर भी इस पर हम थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा हम देखेंगे, थोड़ा समझेंगे कि वो रीजंस क्या है, राइट? फिर द रीजन फॉर दिस सेशन कि हम चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए रेज्यूमेस बनाने के लिए. देखिए, काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि एक ही रेज्यूमे बना लेते हैं और वही रेज्यूमे सबको भेजते हैं, मगर जो रोल हम जिसके लिए अप्लाई करेंगे, और ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हो या कोई सेल्स रोल हो, फर्क पड़ता है कि रोल का डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन आपका कैसे रहता है. तो वो भी हम समझेंगे कि हमको रेज्यूमेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी होता है, ताकि द जॉब विच वी आर अप्लाइंग फॉर, वो जो पढ़े उनको समझ आ जाए कि आपका स्किल सेट, आपका बैकग्राउंड कैसे कनेक्ट हो सकता है. ओके, नाउ हाउ टू यूज द नेक्स्ट थिंग वील डू इज चैट जीपीटी. एक तो है कि हम टाइप करके जो भी मांगे वो दे देता है आपको, हाँ, मगर हम एक कॉन्वर्सेशन यहाँ पर काफ़ी होती है चैट जीपीटी में अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रॉम्प्ट्स. जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफ़ी उसके बारे में पढ़ रहे होंगे आजकल, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड jobs that is available for engineers today, right? Even for just freshers who are stepping into the prompt engineering world, right? So, but how can we use prompts to help us build our resumes is something which is extremely important. Yeah. Now, ये सब करते वक्त हमको थोड़े कोई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम कैवियाट्स बोलते हैं, कि चैट जीपीटी में उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, जो हमारा काम उसके वजह से जो रेज्यूमे हम बिल्ड करेंगे वो कंप्लीट नहीं होगा या उसमें गलतियां हो सकती हैं. सो उस पर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे.
right? I'm going to take this class very slow, one step at a time, because building a resume is actually one of the toughest things that we need to do as people who are applying for jobs, right? वो हमारा एक ब्रांड हो जाता है, वो हमारा एक प्रोफाइल हो जाता है, वो हमारा एक प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो, वो प्रोडक्ट ही है जो रिक्रूटर हमारा यूज़र है जो वो इस्तेमाल करता है और समझता है और पढ़ता है. हाँ जी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो विल कैरी फॉरवर्ड. So before we get into how to use ChatGPT for building resumes, I think it's very important that we spend a little time first understanding some basic principles कि modern resume की एक कोई principles या requirements very basic level पर क्या होती है. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला, हम 3 लोग हैं जो आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट की दुनिया के जर्नी में ले जाएंगे. तलविंदर, सोनपम और मैं. सो मॉडर्न रेज्यूमे, ये वाले जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं आप अपने वीडियो पर, ये पॉइंट्स मैं अभी टच करूंगा वेरी बेसिक लेवल. आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ ईच, बट इफ यू नीड मोर डिटेल्स प्लीज लीव कमेंट्स ऑन द वीडियो. And we can do a follow-up session. We can even do a live session where they can ask me anything kind of session where I will help and take you through resume building. Also, Talvinder will mostly do a little more detailed session, just one session by itself on these 5 principles, right? But we'll see as the requirements start to flow in from you guys, right? So, first thing, format. Format here refers to the basic structure आपका resume में क्या है, right? So I'll give you an example. बहुत resumes में मैं देखता हूँ कि people use 5 pages, right, to build a resume, right? That's not a great practice. No recruiter is going to go through 5 pages, right? जनरल रूल ऑफ थंब जो बोलते हैं या जनरल एक प्रैक्टिस जो बोलते हैं, 10 साल के लिए आपका 1 पेज होना चाहिए. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 पेज में 1000 चीज़ फिट कर लो, क्योंकि वो फिर बहुत क्राउडेड हो जाता है. ये एक कॉन्वर्सेशन हो जाता है फॉर्मेट के साइड पर. फॉर्मेट का दूसरा साइड ये हो जाता है कि बहुत लोग मेरे से आके पूछते हैं, अमर अगर हम ऑनलाइन जाते हैं तो हमको एक पिक्चर वाला फॉर्मेट दिखता है, हमको कभी बॉक्स वाला फॉर्मेट दिखता है, कभी सिंगल कॉलम जो एक सिर्फ स्टेटमेंट्स लाइंस होती हैं वो फॉर्मेट दिखता है, कभी डबल कॉलम फॉर्मेट दिखता है. हमको कौन सा वाला इस्तेमाल करना चाहिए, राइट? आई थिंक पर्सनली विद माई 15 years of experience that I've had, I like to switch between using a single column format. उसका मतलब ये है कि आपके simple singular lines रहते हैं, कोई columns नहीं होते हैं. So single column, no box, no nothing, everything is in that format, right? And sometimes, depending on whether I am applying online, whether I'm applying through a referral, whether I'm applying just as a personal connection, I have to see which format I want to use, and I usually switch between single format and 2 column format. 2 column format का advantage क्या हो जाता है कि I'm able to structure different pieces in 2 different columns, right? One slightly smaller column and one which is a larger column with all my experience, right? Smaller column में आपके skill sets आ सकते हैं, आपका education आ सकता है, आपका certifications आपने क्या किए हैं वो सब आ सकता है, right? So high level पर ये 2 format होते हैं. Very often आप देखेंगे, जैसे अगर आप किसी friend से पूछोगे जो जिसने MBA किया है कोई भी कॉलेज से, MBA में एक बहुत बेसिक फॉर्मेट एक आ जाता है सिंगल कॉलम वाला,
मगर वहाँ ऊपर में एक टेबल रहता है एजुकेशन का. पर्सनली आई डोंट प्रिफर दैट फॉर्मेट, राइट. एंड मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा सा बता देता हूँ अभी. नेक्स्ट स्लाइड में आई विल एक्सप्लेन टू यू प्रोज एंड कॉन्स इसका क्या आ जाता है. ठीक है, ये फॉर्मेट के बारे में हो गया. अब आते हैं लैंग्वेज. Language is not only about whether your spellings are correct or you're using correct English etc. वो proof reading में भी आ जाता है piece, right? Which is correct English, whether you're using your spell check etc. on Microsoft Word or whatever you're using, right? Pretty much anything, even if you use resume builders, बहुत सारे resume builders हैं आजकल. AI resume builders करके बहुत सारे आ गए मार्केट में, राइट. लिंक्डइन भी आपको हेल्प करता है रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए. और लिंक्डइन अगर आप प्रीमियम लोगे तो वहाँ पर आपको ये भी बता देता है कि आप किसी से रिव्यू करा सकते हो और फीडबैक ले सकते हो, राइट. बट लैंग्वेज के ऊपर स्पेसिफिकली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस, राइट. इसका मतलब क्या है? एक्टिव कि मैंने ये काम किया, ये काम करने से ये चीज बदली और ये चीज बदलने से इसका इम्पैक्ट मेरे ये मैट्रिक्स पर पड़ा. ये एक्टिव हो गया कि मैंने कुछ यहां पर किया, राइट. दिस डज नॉट मीन दैट यू राइट आई डिड XYZ. इट इज अबाउट यूजिंग verbs, action verbs, right? Such as led, designed, collaborated, right? और पैसिव वॉइस क्या हो जाता है कि ये तीन पीस जो हैं कि मैंने ये किया, इससे ये बदला और ये बदलने से ये बेनिफिट हुआ या ये मैट्रिक मूव हुआ या इतना पैसा बना. पैसिव में वो पहला पार्ट जो आपने किया वो गायब हो जाता है. सिर्फ ये रह जाता है एंड ओनली दिस पीस रिमेन्स कि ये काम हुआ और इससे ये इंपैक्ट हुआ. अगर आप पैसिव में करेंगे तो हमेशा रिक्रूटर को एक सवाल रहेगा या हायरिंग मैनेजर को एक सवाल रहेगा कि ये तुमने किया, ऑर्गेनाइजेशन ने किया, कैसे हुआ. ये सारे पीसेस और ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट. सो रिमेंबर दैट व्हेन यू आर यूजिंग when you're building resumes, and you can use this, say you can tell ChatGPT also, and we'll come to that, कि आप active voice में मेरे को ये experience help करो कैसे लिखना चाहिए, right? So ये second part हो गया language. अब आते हैं हम third part पर, content curation, right? अब इसका मतलब क्या है? Generally मैं जो and मैंने काफ़ी फ्रेशर्स को भी और काफ़ी पीपल हु आर एक्सपीरियंस बट जो ट्रांजिशन कर रहे हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है उनके रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए, राइट. और वो कौन से जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं, वो जॉब्स के बारे में कैसे पता कर रहे हैं और उनके रेज्यूमेस कैसे बिल्ड होना चाहिए. ये क्यों करते हैं? क्योंकि जनरली क्या हो जाता है कि एवरीबडी फील्स दैट मैंने अगर 2 साल कोई कंपनी में काम किया है तो मैं सारा कुछ जो मैंने किया है वो सारा कुछ लिख दूं. ऐसे नहीं हो सकता. ऐसे करोगे तो आपका 10 पेज रेज्यूमे बन जाएगा. समझो अगर आपने 5 साल काम किया या 10 साल काम किया, मगर कोई भी इतना पढ़ेगा नहीं, राइट. सो मैं जो एक सजेशन रिकमेंडेशन देता हूं टू पीपल हु आर बिल्डिंग देयर रेज्यूमेस is that you build first and foremost a master resume, and it is a draft master resume. What does that mean? That means that everything that you can think about that you have done in the company, in your different organizations, you list out. And this is not a resume that you share with anybody. This is for yourself. It's like a record. Think of it like a master resume record. इसमें आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डालेंगे, क्योंकि आप जैसे थॉट प्रोसेस करेंगे आपको समझ आएगा और क्या रखना चाहिए, क्या क्या किया आपने. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अचीवमेंट्स डालेंगे. यहाँ पर
थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों पर I'll spend 2 minutes. Please understand there's a difference between the responsibilities we have when we are working and the achievements that we did. Companies are not so interested in your responsibilities, but more interested in your achievements, right? Let's take, if you're right now, most of y'all who will be watching this video will probably be freshers, right? So it's not like you have a lot of work experience, but maybe you've done internships. Maybe you've worked with, say, the Rotaract Club or certain clubs in college, right? Maybe you've done some NGO work on the side, right? And you may feel कि अमर हमने तो इतना कुछ कोई achievements तो नहीं किया, वो फेयर है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने किया कितना वेग है या कितना जेनेरिक है, और हजारों और भी करते हैं, या आपने कुछ यूनिक किया और वो करने से कुछ कहीं कुछ हेल्प हुआ, कुछ बदला, कोई इम्पैक्ट हुआ. दैट थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इवन इफ यू आर अ फ्रेशर और यू आर एन एक्सट्रीमली experienced person, I think a master resume first is very important to build out, right? So once you've built that out, then as you go through the process of reading the job descriptions of where you're applying, you will need to edit your resume in alignment with the opportunity. अब हो सकता है कि वो अलाइनमेंट आपको करना पड़े टेक्नोलॉजी के हिसाब से. जैसे फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर टुडे, हैविंग सम एक्सपीरियंस इन AI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ आई हैव डन 10 थिंग्स बट आई हैव डन ओनली 2 थिंग्स AI बेस्ड, आई विल फोकस फर्स्ट ऑन दैट. अगर आप फ्रेशर हैं और आप कोई असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर के रोल पर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के सोचना पड़ेगा कि आपने क्या किया है जो वो स्पेसिफिक कंपनी के लिए आप उनको एक वैल्यू ऐड दे सकते. तो आपको वो फ्रेम करना पड़ेगा. तो आपके जो मास्टर रेज्यूमे है उसमें से आप कैसे निकाल के ये आगे आप डाल सकते हैं. दिस इज अबाउट कंटेंट क्यूरेशन. वन शुड डेफिनेटली नॉट पुट एनीथिंग इन एवरीथिंग, राइट? आई एम अ फर्म बिलीवर दैट even if you have not a fully packed one-page resume, right? You have a slightly little lesser, but you have impactful achievement-based statements over there. That has much more value to the recruiter, right? For them to say this person is somebody good and I should immediately get in touch and ask the person to interview with us, right? Interviews resume के basis पर सबसे पहले होती हैं largely. Majority, that is how it works, right? So this is about content curation. Content curation actually is much larger, and I think Talvinder will spend more time on that, and I'm happy to do another session depending on, you know, your comments on the video, right? Visual appeal. अब visual appeal प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करिए. ये इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कलरफुल बनाएं. इनफैक्ट मैंने इन माई इनिशियल ईयर्स 1-2 बार कलरफुल बना के भेजा आगे एप्लीकेशंस को, और वहाँ से फीडबैक आया कि आप जो रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, तो आपको इतना कलरफुल बनाने की क्या ज़रूरत है, वो तो उल्टा इफेक्ट हो रहा है आपका. तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि under visual appeal, when we say make your resume stand out, right? How do you do that? So for example, in single column, which is 1 lines only, format, I usually use up to 2 to 3 2 colors mainly, maybe 3 colors. I try to avoid a third color. Text is always in black, right? And I always maybe the role or the designation that I've had comes in a blue color. Maybe my name right on top comes in a slightly different color.
But please don't use colors such as pink, etc., unless you're applying for a role where these are important. In a 2-column format, मैंने क्या किया है? I have put my picture, for example, right? I've used an AI builder and I've used a particular template, but I've modified it to still keep it visually appealing, not overly colorful, very specific content curated for that, active language, and at the same time achievement based, right? That's most important again, I would say. अब हम आते हैं 5वें पीस पर. While the first 4 are super important, what happens is we tend to forget the 5th piece. And I have known recruiters and hiring managers, and I myself have rejected resumes basis the fact of very, very simple, silly spelling mistakes, right? There is no reason for that. For me, I'll give you an example. I have spent 15 years working, right? So my master resume must be quite large by now, right? Every time that I'm applying for a job, I don't look at the whole master resume. I've already brought it down to a smaller draft. And then I content curate from there. But every time I content curate, and when we use ChatGPT right now, आपको समझ आएगा, आपको proofread करना ही पड़ेगा. Sometimes for say, if you are right now applying for jobs, you might apply to 100 jobs. You might get in this market, you might get a call back from maybe 10 of them, right? Your resume cannot be the same for every single one of them. For some of them, it may be the same, absolutely. But sometimes basis the job description, आपको वो modify करना ही पड़ेगा. जब हम modify करते हैं और हम एक टूल जैसे ChatGPT या AI टूल बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रूफ रीडिंग पीस वाली चीज जो है वो गुम हो जाती है. Now, not all of us are great at English, right? So what have I done in the past? I've actually asked my friends or my colleagues or my family members who are good at English, right, to actually read the resume once and tell me what they think. अब इससे क्या होता है? सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स बाहर निकल के नहीं आती. इससे क्या होता है कि एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि आपने जो लिखा है वो समझ भी आ रहा है किसी को. While you have to keep technical, you have to use keywords वगैरह वगैरह, all of that, it needs to be something that not just your hiring manager who understands the terminologies and keywords जो आप इस्तेमाल करोगे, but एक recruiter. और कभी कभी पहले रेज्यूमे जाता है एक जूनियर रिक्रूटर, उसको शायद आपके रोल के बारे में इतने डिटेल्स नहीं समझ आती, राइट? सो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस, एंड ये ट्रायल एंड एरर से होगा. मगर प्रूफ रीडिंग के लिए कोई ट्रायल एंड एरर सिस्टम आप एक्सटर्नली एप्लीकेशन में नहीं करेंगे. आपको करना चाहिए पहले अपने अंदर और अपने सर्कल में, अपने फैमिली या फ्रेंड्स या किसी के साथ. प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबडी, दिस इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट, राइट? एंड अगर हम कभी कभी इतने रेज्यूमेस बना रहे हैं, हम जितना भी प्रूफ रीड करें, हमको सारे मिस्टेक्स नहीं दिखेंगे. अगर आप आज के दिन में जो AI इतना बढ़ चुका है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जीमेल में भी कोई ईमेल टाइप कर रहे हो, इट डजंट कैच ऑल मिस्टेक्स, ऑल ग्रामर मिस्टेक्स, ऑल स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट? तो सोचो, आप अगर इतने रेज्यूमेस बना रहे हो तो आपको भी तो मिस होगा. यू शुड यूज take help, yeah, very important, guys. So yeah, okay, we'll carry on. All right, so there are a few points here which I've referred to in the earlier slide, but I'll deep dive a little bit more into, right? So when I was talking about master resume, right, आप सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, करेक्ट? सिमिलरली आप जब कोई रोल के लिए अप्लाई करेंगे, आपको पहले इंफॉर्मेशन गैदर करना है. आप इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे? आप कंपनी के बारे में गैदर करेंगे. फिर आप क्या कर सकते हो? आप जा सकते हो जॉब्स पर, प्लीज समझो लिंक्डइन पर,
जॉब डिस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, आप जो वो कंपनी में आप जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, वही कंपनी के बाकी प्रोडक्ट मैनेजर्स या बाकी रोल्स में लोग उनका लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो कैसे दिख रहा है, उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन डाला सेम लेवल पर, ये भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट सोर्सेस, राइट? Second point, I've sort of touched upon it in the earlier slide, but just to reiterate and repeat, you need to clearly define कि ये specific resume जो आप बना रहे हो, इसका purpose क्या है, इसका goal क्या है, right? माने अगर आप कोई job apply कर रहे हो तो वो job का description या requirements क्या है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे job descriptions market में होते हैं जो जेनेरिक होते हैं, माने वेग होते हैं, माने सेम टू सेम होते हैं। तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले समझो कि बाकी जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो कंपनी, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे दिख रहा है, उन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन डाला, राइट? अगर आप प्रोडक्ट एसोसिएट एपीएम लेवल पर अप्लाई कर रहे हो या एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, you should not be looking at somebody who's a VP product, right? Look at other people who are associate product managers or product manager levels in the company to understand, right? We come to the third piece. Now, this is where in the previous slide, if you remember, I was referring to formats, right? So the reason that I more often than not recommend single column, meaning it's just one page, there are no different columns, no boxes, it is lines, and you use bullet points and you use subheadings, etc. The reason for that is when you are applying online or you're applying through company websites, there is something that they all use, most of them, right, called an ATS. It's an applicant tracking system, right? And ATS as a technology does not fully, let me rephrase, does not completely very well or very smartly read multi-column formats or tables or images in resumes, right? So, or if you add an image, if you add a table, if you add 2-3 columns and you try to make it very different and fancy, your ATS system sometimes automatically reject it, right? I'm not saying it always happens, but basis my experience and basis experience of a lot of people that I speak with and interact with, it's important that you create resumes that pass through ATS systems, right? So whenever I'm applying online, right, and I know and I have a sense that an ATS system will be involved, more often than not, I try to keep it a single column. If I'm applying through a connection or if I'm applying through, say, a referral, or I'm sending my resume directly to somebody on LinkedIn in mail, right? Maybe to the recruiter, I then use a 2-column format with my picture, and it's a much more nicer structure or format, right? But you have to decide this. Third, the next piece, right? So very often, like अगर आप मेरा एक्सपीरियंस देखोगे, मैंने बहुत सारे डोमेन्स में या इंडस्ट्रीज में काम किया है, राइट? और हर डोमेन या इंडस्ट्री में टर्म्स अलग होते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो समझो आप अप्लाई कर रहे हो कहीं पर विच इज से एडटेक, राइट? एंड maybe you're trying to build the resume basis what work you've done or internships you've done, or maybe you've done some product projects, right? Maybe a product teardown, maybe making mock-ups, right? You need to see and understand what are the relevant keywords and specific terms for edtech which you need to bring into your resume, right? Because what tends to happen
is if you don't do that, then the recruiter or the hiring manager sometimes thinks कि आप क्या contribute करेंगे. आपने generic लिखा है, मगर आपके ये skill sets कैसे transfer होंगे? You are expecting then that person to use their time and energy to try and see how you fit. You should not do that. You should make it super simple for that person to know कि yes, this person fits into my organization, right? So ChatGPT also is a great tool to use to do this work, and we'll experiment a little bit with that, right? Similarly, like I was talking about, using action verbs, right, and metrics. So remember I told you abhi about the difference between responsibilities and achievements, right? Achievements is when you've moved a metric, and metric एक शब्द है जो आप बहुत सुनेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, हाँ, कि आपने ये मेट्रिक कैसे मूव किया या इतना मूवमेंट हुआ. समझो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ CRM प्रोडक्ट मैनेजर. CRM माने आप जो कॉल सेंटर एजेंट्स जो एक सॉफ्टवेयर पर बैठ के कॉल लेते हैं, एक डैशबोर्ड होता है उनके पास वगैरह वगैरह, वो CRM बोलते हैं उसको. तो समझो आप CRM प्रोडक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट? तो आपके मेट्रिक्स क्या मूव किए हैं आपने, या आप कौन से मेट्रिक्स टारगेट करोगे, वो हो जाते हैं थिंग्स लाइक एफिशिएंसी, नंबर ऑफ वर्क आवर्स रिड्यूस्ड वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं, राइट? बट एज अ फ्रेशर आपको मेट्रिक्स आप कैसे दिखाओगे? से फॉर एग्जाम्पल यू डिड एन इंटर्नशिप 3 months समवेयर, एंड आपने नई सेल स्ट्रैटेजी बनाई, राइट? और वो नई सेल स्ट्रैटेजी के वजह से कंपनी को 1 crore का एडिशनल रेवेन्यू मिल गया, या ये आपका हो गया, राइट? सो दैट्स द मेट्रिक दैट यू हैव मूव्ड. कूल. So this is, I've spoken so far, about essentially the modern resume. Okay, now let's move on. What is ChatGPT? अब ये आज की दुनिया में तो सबको पता है, ऐसी तो कोई नई बात है नहीं इसमें, है ना? So एक ChatGPT एक AI लैंग्वेज मॉडल है जो OpenAI कंपनी ने बनाई है. वो क्या करती है? एक ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स आपको दे देती है आपके रिक्वेस्ट पर, आपके स्टेटमेंट पर, आपके क्वेरी पर, राइट? इट्स लाइक यू आर टॉकिंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग, राइट? बट ह्यूमन लाइक, ये थोड़ा याद रखिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों. और 3, सो बेसिकली यू कैन यूज दिस टूल, राइट, विच इज फ्री फॉर एवरीबडी, टू बिल्ड योर रेज्यूमेज more effectively and to build it much more efficiently. Okay, thoda sa let's spend another 2-3 minutes just thoda getting into the little technical side of ChatGPT, right? It's not super important but good to know. Yeah, so like I said, it's an AI based chatbot that utilizes a GPT technology, generative pre-trained transformer technology, right? And something called natural language processing models, NLP, to generate high quality human like responses. Okay, that's about the model. So what can ChatGPT do? It can converse with users on many topics. माने अलग अलग चीजें, जनरल नॉलेज से लेके आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपको अगर कोई हेल्थ इशू हो रहा है आप पूछ सकते हो, ChatGPT आपको वो आंसर देगी, है ना? अब ChatGPT is always learning, right? It's a learning model, correct? So whatever previous conversations आपने की है ChatGPT के साथ, उसके ऊपर वो लर्न करती रहती है, और आपके जो आगे वाले रिस्पॉन्सेज हैं उसको और पर्सनलाइज, मीनिंग मोर स्पेसिफिक टू यू एज अ पर्सन, it keeps building, right? Now it doesn't only learn from you, as the third point जो यहाँ पे लिखा हुआ है, it learns from vast amounts of data, right? From the internet,
and everywhere, right? And it generates text that is contextually relevant, grammatically correct, and semantically meaningful. Now, very heavy words and all over here, बहुत simple कर देता हूं मैं, right? कि आपने जो सवाल पूछा है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो जवाब देगा, जो जवाब देगा मोस्टली, और मैं बोल रहा हूं मोस्टली, यहां लिखा नहीं है चैट जीपीटी ने, मगर मैं बोल रहा हूं कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. बट इन प्रैक्टिस आई हैव सीन एरर्स, राइट? Semantically meaningful basically again has to do with what is the specific request that you're putting in, right? So this is on the technical side, not getting it too much into it. If you are interested, just again drop a message on the video and we'll figure out maybe to do a deeper session, right? Maybe a ChatGPT advanced. Yeah. So let's come to the main thing, है ना? ChatGPT and resume capabilities, ठीक है? Just before we get into this, एक चीज, मैं ये जो हमारा सेशन है, मैं इसको थोड़ा 2 पीस में स्प्लिट करूंगा. पहला पीस ये रहेगा जहां मैं आपको टेक के थ्रू ले जाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, और फिर मैं एक सेक्शन रखूंगा where we actually practically look at using ChatGPT, take a like somebody, like just a example of a resume, experiment with it, see what comes out and things like that. ठीक है? चलो वापस आते हैं. तो ChatGPT and resume capabilities. So the most important thing, at least which I have come across, right? अगर आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए, आपकी टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी, राइट? क्योंकि चैट जीपीटी आपको इमीडिएटली फीडबैक दे सकता है जो रेलेवेंट है, आपको सजेशंस दे सकता है, आपको ये बता सकता है कि आप ये चेंज करो, ये रखो, ये रिमूव करो, ये सब कुछ कर सकता है. मगर ये तब कर सकता है जब आप उसको प्रॉम्प्ट करोगे या उससे बात करोगे कि आप ये मेरे लिए करो, है ना? That's called prompts and we'll come to that, right? Second piece, so if you remember, मैंने काफी पहले स्लाइड्स में एक पॉइंट पर स्ट्रेस किया है, वो है कि हम रेज्यूमेस को पर्सनलाइज कैसे करें स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए, है ना? या अगर हम सिंपली जेनेरिक रखेंगे और सबको यही भेज देंगे तो वो रेलेवेंस टूट जाती है. और आज की दुनिया में सबको पता है किसी के पास इतना टाइम नहीं है. आपके रिक्रूटर को समझो, अगर पहले, एंड आई एम टॉकिंग ओनली 6 months to 9 months ago, right? If they were maybe getting 100 resumes a day for a particular position, today they are getting up to 1,000 resumes a day. So if they were spending maybe 30 seconds or 1 minute on a resume earlier, they literally have between 10 to 15 seconds, right? I'm not giving exact mathematical calculations, I'm giving you approximates. We will also be doing a session, I will be having a conversation with somebody who's been a recruiter for more than a decade. She's worked with some of the biggest startups around, right? And we'll understand from her कि ये रेज्यूमे का इंपॉर्टेंस क्या होता है, रिक्रूटर्स कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, है ना? तो कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? द थर्ड पीस वेयर व्हाइल आई फील कि चैट जीपीटी डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको, इट इज नॉट अ फाइनल सोल्यूशन, विच इज लैंग्वेज असिस्टेंस. आपको वो एक स्टेटमेंट को थोड़ा और कंसाइज कैसे करना है, इसकी फॉर्मेटिंग या इसको और थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड्स में कैसे लिखना है, इसका ग्रामर थोड़ा ठीक करना है, वो सब थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगी. आपको ज़्यादा हेल्प करेगी थिंग्स लाइक कि ये स्टेटमेंट को आप थोड़ा इस तरह बना दो, मगर ग्रामर में आपको फिर भी अपना चेक करना ही पड़ेगा. ओके, सो यस, ChatGPT helps a lot with language assistance, right? And it can improve the clarity and effectiveness कि आपका रेज्यूमे का कंटेंट क्या है.
फॉर्मेटिंग में भी हेल्प करती है, स्ट्रक्चरिंग में भी हेल्प करती है, राइट? बट कीप इन माइंड, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई वर्ड डॉक्यूमेंट आप चैट जीपीटी में घुसाओगे, वो आप कर नहीं सकते, आपको कॉपी पेस्ट करके डालना पड़ेगा। तो when you are copy pasting from a Word document or a PDF, right, and it is in a particular format or a structure, and you put it in ChatGPT, ChatGPT can't recommend so much to you then on the format and structure. So understand these pros and cons a little bit as you go, right? So what we like, I'll just go through this, correct, and we'll touch upon a few of these points. ठीक है? So build a master resume and include keywords, right? समझो across all your JDs, yeah, similar roles in industries. So examples can be, if you are applying, if you've been in sales jobs, you're applying for sales jobs. So lead generation is a keyword, business development is a keyword, B2B, for example, will remain same in a lot of industries across companies. Now, what is this first part, right? This is about your master resume. This is your step 0, I will call. No, it's not even a step 1, right? जहां पर आप सारा इंफॉर्मेशन अपना डालें। आप जब वो आप देखोगे, वहां पर आप, when you do your first reviews over there, it's very, very important, right, that you add keywords. And you can go to ChatGPT and ask ChatGPT for keywords for particular roles and particular designations and particular industries, etc. But it's important to bring this into your master resume itself before you start getting into the next steps of specific resumes for specific companies, right? You can take different job descriptions also and put it into ChatGPT and say that, hey, hi ChatGPT, these are 5 job descriptions below. Can you give me a summary of the top keyword, of the top 20 keywords from all these job descriptions, right? And it'll read that for you and come back with an answer. Yes? So that's another way that you can use ChatGPT here. Okay? So now let's go on to a few more steps. Okay? Let's move away from just the master resume. Say now आपने सोच लिया है अमर मैं ये कंपनी में अप्लाई करूंगा, ये जेडी है, राइट? एंड एक्चुअली उन्होंने ना 3-4 प्रोडक्ट मैनेजर के रोल्स निकाल लिए हैं, ठीक है? एंड वो जेडीज आप इकट्ठा करो. इफ यू रिमेंबर वन ऑफ द अर्लियर पॉइंट्स अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन, राइट? This is gathering information. What you can also do is say, maybe you are applying to a smaller company, maybe in the edtech space again, right? And the smaller company has one JD and it's very general JD. तो आपको क्या करना चाहिए? You should find an industry leader in edtech, right? Maybe Unacademy, and look at how the job descriptions are over there. Take 3-4 of those, right? And then again bring that together, put it into ChatGPT and tell ChatGPT, here are 5 JDs, right, from the edtech space in India, right? I want you to identify core skills, technical skills, software, etc., 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 etc. from these JDs. So instead of just keywords, it will actually take those many JDs that you've put into the system, right, and come back to you with an answer of which are the core ones, which are the key ones, right? Then what can you do? समझो आपको ये एक रेडीमेड लिस्ट मिल गया. अब आप ये लिस्ट को, जो आपका एक ड्राफ्ट रेज्यूमे अब आपने बना लिया है, right, you can take these skills, etc., and see how you can repeat these into your summary, your experience, your skills, tools, educations, projects, etc. Right? So it is a dual work that you're doing. Magar ChatGPT is doing most of your thinking for you. Right? अब आपने जब ये ट्रांसफर कर दिया है, राइट, आप जब ये डालोगे वगैरह वगैरह, आपको एक बार ये सब चीज डाल के अपने ड्राफ्ट रेज्यूमे में आपको पढ़ना चाहिए.
you should review it. Because what tends to happen, and it's happened with me also, is that sometimes we just fill it up with keywords and just this skill set and this experience, we modify it to actually mean this when actually I had done this, right? Be very careful about that. You should not, if you have done a particular project and you, with a particular purpose, you did it in a particular method, you arrived at a particular conclusion, or you created a particular impact, right? Just for the sake of applying for a role, you should not just completely change this around where all the meanings of all these pieces get lost. Why? Because you may get through the, when you give your resume, you may get through, but what will end up happening is you will lose out. Because when you get your interview, in first round interview, and they ask you questions, you will not be able to answer it in the way that you've written, क्योंकि आपने काम ही अलग किया. So how you take the information from ChatGPT and put it in becomes very, very important, right? Next piece. Basically, you can take maybe a specific JD now. You have your draft resume, you have a specific JD. You can put both in. You can tell ChatGPT, hi ChatGPT, here is my job description for this company, which I want to apply as a product manager for. And below that is my current resume. Please recommend a new resume to me. You don't even just that much. We'll give you one new draft, right? Which your resume लेगा ChatGPT, वो inputs लेगा, उसको merge करके आपको एक नया resume देगा, जो आपको review और फिर से करना पड़ेगा. ये तो बोला है. Now, what are all these? These are all prompts, right? So let's look at a few examples of prompts. So, hi ChatGPT, based on my experience and skills, how can I enhance the presentation of my work history, right? Another prompt is, what are some effective ways to highlight my key achievements? मैंने key achievements तो लिख दिया, मगर मैं इसको थोड़ा better showcase कैसे कर सकता हूँ, right? How can I make my resume stand out for this job, for a particular job application? Now, ये वाला statement थोड़ा generic है. आप ChatGPT को और कैसे help कर सकते हो? You can make it more contextual or relevant. Is, how can I make my resume stand out for this particular job application and the description you put below? It'll be even better, right? Now, fourth one. So, this is a very controversial prompt, right? क्योंकि मैंने काफी recruiters से बात की हैं, काफी hiring managers से बात की हैं इस पर. So, in our, in most of the companies, at least that I have seen and interacted and spoken with, if you ask ChatGPT what is the best resume format for that industry, it will give it to you, right? But you need to understand ChatGPT is giving you this example basis a lot of data, right? The data is not specific to that company or India, etc., right? So be careful with this prompt, but try it, experiment with it, have fun with it, right? What I have learned with ChatGPT, honestly, as a product manager, not just for resumes, and I'm going to do many sessions in the next few days on using ChatGPT for different things as a PM. It's experiment, have fun. I think that's very important, right? Then next way that we can use ChatGPT, right, is use it as a prompt, right, with a job title. So you can say, ChatGPT, give me three key achievements for my resume as a product manager using these keywords. Keywords आपने तो पहले निकाल लिए, है ना? तो आप पूरा resume मत डालो, आप सिर्फ with your job title and ये simple statement आप डाल दो, and ChatGPT will come back to you with these answers, right?
I'm taking you through all of these, but yes, like I said, in the second section, we're actually going to spend a little time doing this, like manually doing this on ChatGPT to see what happens, right? So then you can take this, add it into your work experience. Then you can take a full resume, right? And you can paste it into ChatGPT and ask ChatGPT to give you an ATS score. Now this is very, very cool, right, guys? And I've played around with with a few people's resumes in the past, when they wanted me to help them, to build it, and how ChatGPT gives an ATS score, right? ATS being applicant tracking system, meaning कि ये जो resume का content है, ये ATS में कितना score मिल जाएगा आपको, ठीक है? Because ATS is not only about your format or structure, it is also about the content, right? Please remember that. Cool. Going on to the next piece. So there's this post that I came across, brilliant man by the name of Sankalp Chhabra, and this was actually a couple of months ago when ChatGPT by OpenAI had just started, had just come out. Everybody was exploring it, and things were really picking up, right? आज की दुनिया में तो आप अगर न्यूज़ पढ़ोगे या वीडियोस देखोगे तो बहुत बातचीत हो रही है कि चैट जीपीटी का परफॉर्मेंस कम हो रहा है, लामा 2 जो मेटा का है वो बहुत अच्छा कर रहा है, बार्ड जो गूगल से आया है वो भी काफ़ी अच्छा करने लग गया है, तो चैट जीपीटी कैसे सर्वाइव करेगा वगैरह वगैरह, राइट? आई स्टिल फील पर्सनली चैट जीपीटी इज very, very user friendly, right? And I'm sure that if there is a performance drop, they will figure out how to improve it, है ना? So anyways, coming back to this, संकल्प जी ने ये 4-5 पॉइंट डाले थे लिंक्डइन में. So संकल्प जी, thank you. I'm going to borrow from you and showcase this to the students here. So what can you do? You can simply say, can you provide feedback and suggest improvements for only this section of my resume, maybe your work experience section, right? And you need to tell ChatGPT कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ रोल ऑफ PM में ये वाले कंपनी में, and I hope to get selected or I want to get selected, right? उसके नीचे आप लिख देना कि आपका वर्क एक्सपीरियंस जो रेज्यूमे में है उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा. आप एंटर दबाएंगे और आपको फिर ये फीडबैक आ जाएगा, है ना? सिमिलरली, कैन यू टेलर माई एक्सपीरियंस, मीनिंग कैन यू मॉडिफाई इट, राइट? कैन यू फाइन ट्यून इट फॉर मी टू सूट द रोल ऑफ अ PM एट अ टेक बेस्ड कंपनी. ये समझो आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो, शायद डिफरेंट कोई रोल में, नॉट प्रोडक्ट, राइट? आप ट्रांजिशन कर रहे हैं तो आपके पास कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट का तो एक्सपीरियंस है नहीं, शायद सेल्स का है ना? तो अगर आप ये डालोगे, आप अपना कंटेंट डालोगे और आप लिखोगे चैट जीपीटी को कि आप टेलर करो या कस्टमाइज करो, राइट, फॉर द रोल ऑफ अ PM, सो इट विल देन हेल्प यू. हाउ डू यू टेक द सेल्स अचीवमेंट्स दैट यू हैव डन to maybe modify it and bring it into a specific role of a PM. It can also be that you've done PM का थोड़ा काम पहले, हो सकता है, या आपने शायद कोई डिज़ाइन बनाया हो एप्स के लिए, तो आप ये कैसे चेंज कर सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक रोल इन अ न्यू कंपनी, राइट? सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू कैन ट्राई एंड डू. सिमिलरली, अगर आपने सेल्स जॉब नहीं किया है, आप इंजीनियर नहीं हो, समझो आप प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हो, राइट? ऑपरेशंस में रहे हो. सो यू कैन पुट योर रेज्यूमे इनटू ChatGPT and ask ChatGPT that what are the transferable skills from my resume or from my work experience that I can use to get selected as a PM in a tech company, right? This is very, 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 very interesting to do. राइट? बिकॉज यहीं पर हम अटक जाते हैं. दिस इज वेयर आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स गेट स्टक
कि what do I do here, right? Because I'm not from this industry. How do I get into product management, right? I don't know if I have the skill sets, etc., right? So use ChatGPT sometimes literally like a search tool first to gather information, right? And then come back, and I do. I sometimes I use Google, sometimes I use ChatGPT as search, right? And then find what skills you have from the current resume that you have that can be used as a PM, right? We spoke about the ATS scoring check, so I'm not going to repeat it, right? I'm going to spend the last minute or two, in this section about writing an objective or a summary on top, right? इतने resumes मैंने over the years पढ़े हैं, and there was a particular role where I was in the training and hiring space for the banking industry, right? And sometimes I needed to, I was a product and strategy and digital lead, right? But part of my job was also finding the right candidates for specific roles such as relationship managers, premium relationship managers in particular top banks, right? And they needed to, of course, go through an online test, etc., etc. But first level filtering hoti thi, where over a period of 2 days we used to have walk-ins of hundreds of people, right? And for me and for other recruiters that I've known, जो summary और objective ऊपर में आप जो लिखते हो, that is the first thing that gets looked at, right? So it's very, very important that आप लिखो, क्योंकि इतने लोग, इतने स्टूडेंट्स, इतने फ्रेशर्स, इतने एक्सपीरियंस पीपल मैंने देखे हैं जो ये लिखते ही नहीं, right? And this is a big miss. So definitely write a summary, right? And you can tell ChatGPT, write a summary of less than 35 words, optimizing it for getting shortlisted at a tech company as a PM, right? So समझो आपने कुछ लिखा है, उसका copy paste आप कर दो और उसको वो ये modify कर देगा, right? So that's kind of what I wanted to cover in this first video. Immediately along with this, I'm going to also, like I said, I'm going to split this into 2 sections. I'm going to now go into a second video where I will open up an example and actually use these prompts to take you through maybe what happens in ChatGPT in such instances, right? Okay, so thank you. And just as an ending note, I'm going to actually do a bunch of sessions on how we can use ChatGPT as a PM, right, in the next few days. Depending on your queries, your responses, your messages on the YouTube channel, I might then do, like an Ask Me Anything, where we can maybe together, come together and build resumes together. We can review a few resumes together. We can use ChatGPT and modify things and, just work together on it, right? So, thank you very much. This is the end of the session of ChatGPT beginner level for using it for building resumes. Thank you.